अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज की रेसिपी है बीफ बर्गर्स। इसके लिए आपको चाहिए 1.5 किलो कीमा, 300 ग्राम चर्बी, 3 भरे ग्राइंड किए हुए प्याज, 2 टेबलस्पून ग्राइंड की हुई ग्रीन चिली, 4 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन, 3 टेबलस्पून चना पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून जायफल, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा एंड 2 टेबलस्पून धनिया, मेयोनीज, केचप, जलापेño, टमाटर, लेट्स एंड चिली गार्लिक सॉस बर्गर्स के लिए। अब हम टिक्की प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम कीमा में चर्बी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, लहसुन, अदरक, नमक एंड रेड चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिली, चना पाउडर, ब्लैक पेपर एंड जायफल, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और धनिया। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कीमा मिक्स हो गया है। अभी हम इसको हाफ आवर के लिए साइड में रख देंगे। अब हम बर्गर पैटीज बनाएंगे। पैटीज़ का हमने बहुत पतला रखना है और हाथ में साथ साथ पानी लगाते रहें ताकि चिपके ना। इसको हमने इतना भरा और इतना पतला रखना है।
अब हम बर्गर के लिए सॉस बनाएंगे। 4 टेबलस्पून मायोनीज़, 2 टेबलस्पून केचप, 1.5 टेबलस्पून हॉट सॉस, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून paprika। और अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मम्मी सोचती इनको अडॉप्शन पे दे देती हूँ मैं। देखो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, थक गई हूँ मैं टिक्कियाँ बना के। टिक्कियाँ बनाएंगे, मेरी ज़िंदगी टिक्की बन जाएगी। सबसे पहले हम हाथ में थोड़ा पानी लगाएंगे, पूरी टेबल पे गिरा देंगे।